चलो, so what is the formula we learned? Flux का flux, net flux in a closed surface is closed integral E dot dA. This is the formula through maths we are applying. Okay, what is the formula? A closed integral. This circle is nothing but closed integral E dot dA is equal to, from the flux through Gauss law, Q inside by epsilon naught. Okay, this is the formula. This is through Gauss law. This is through mathematics. E dot dA, closed integral E dot dA. Okay. Now we are using these expressions only to find the electric field. Gauss law से अभी तक flux we found, but here we are trying to find electric field by equating maths का expression with the Gauss law. We are trying to find electric field in each cases. Total 4 applications are there. 4 applications हो गया तो chapter will be done. Okay. एक application में we will see how to find, and you know how to find flux, right? E dot dA, dA लगाने का how many surfaces, that many surfaces, and we have to find angle and we have to add. Okay. चलो. So first application of Gauss laws. उसमें first application is infinite long uniform charge wire. Infinite long uniformly charged wire. Like we derived also. We got it lambda by 2 epsilon d बोल के आया ना, that one. There हम लोग theta 1 theta 2 लगा के we solved, but here through Gauss law we are deriving this expression. चलो, infinite long wire charge wire we will see. Okay, so here there is a infinitely, एक आगे तो all models are same. Infinitely charge wire, infinite wire. Okay, इधर से मुझे r distance दूर में I want to find electric field at this point P. I want to find electric field at this point P. Okay, so Gauss law, and you know this is a 1 dimension, 2 dimension charge wire है, एक small wire है. It is 1 dimension, right? The 1 dimension में we use lambda, right? What is lambda? It is charge per, याद है charge per unit length बोल के lambda. And for 2 dimension what will you use? dq by dx. 2 dimension में we will use lambda के जगह में sigma will use. And for 3 dimension में rho will use, volume charge density. Okay, चलो. So first step क्या करने वाले? First आपको इसको सिमेट्री बनाओ. Gaussian surface draw करना पड़ेगा always, right? Gaussian surface क्यों draw कर रहे हैं? So that the charge should be symmetric, right? So मैं क्या करूंगा, इधर से भी r distance यूज करके. So what is the Gaussian surface इसका? Simply cylindrical. Line charge का Gaussian surface is cylindrical. This is a Gaussian surface. Okay. Infinite length का we are not drawing. That's why we are drawing like L length का Gaussian surface we are drawing. Okay. Infinite बहुत दूर है ना, so वो छोटा सा Gaussian surface we are drawing. Okay. So first step we found Gaussian surface draw करो. And first formula लिखो. What is the formula? Flux in a closed surface is equal to closed integral E dot dA is equal to Q inside by epsilon naught. This is the formula we are using, and we are trying to find electric field at this point. Okay. So first flux find करेंगे. So how many surfaces are there here for cylindrical? How many surfaces are there? First surface, second surface, and third surface is third surface, right? So 1, 2, and 3, third surface. And you know positive charge की वजह से electric field is away. Positive charge की वजह से electric field is away. Okay, we are trying to find flux through maths के लिए use करके. Okay, so first surface का this is a uniform field or non-uniform field? Uniform field or non-uniform field? Electric field. On that I told बोले क्या? Uniform or non-uniform? Non-uniform field. Direction देखो इधर है, इधर है. Electric field is vector quantity
आइदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो ये नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं. ओके, दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग, इसका एरिया वेक्टर कैसा रहेगा, इस सरफेस का एरिया वेक्टर आउटवर्ड्स आई कॉल डीए, स्मॉल एरिया का डीए वेक्टर, and electric field is like this, right? So angle between them is how much? 90. So what is the flux due to this first surface? See, we want total flux, right? So phi 1 plus phi 2 plus phi 3 is equal to q inside by epsilon naught. Okay, first surface का flux is how much? कितना होगा? Angle is 90, right? So E dA Yes. cos 90 0. So ये 0 हो गया, plus second surface का dA vector is downwards and electric field is like this and angle is 90, so ये भी 0 हो जाएगा, plus थर्ड सरफेस का, कर्व सरफेस का we'll see. थर्ड सरफेस का क्या होगा? क्लोज इंटीग्रल. टेल मी एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल इज हाउ मच? देखो एरिया वेक्टर इस सरफेस स्मॉल एरिया का एरिया वेक्टर दोनों एंगल इज 0, राइट? सो क्या होगा? E dA cos 0, right? This is a flux, right? Third flux is equal to q inside by epsilon naught. Okay, now cos 0 is 1. Okay, now electric field magnitude wise same, right? Magnitude wise same, because इधर से ये कितना डिस्टेंस है, ये भी उतना डिस्टेंस है ना. Magnitude wise electric field is same, so electric field is coming outside. Closed integral dA is equal to q inside by epsilon naught. Okay, what is dA? dA addition of all the area, that is curved surface of area of a cylinder. What is the curved surface area of a cylinder? Circumference into height, this curved surface. So कितना होगा? L का height is L, right? So 2 pi RL, right? RL is equal to इस गॉसियन सरफेस में चार्ज कितना है इस गॉसियन सरफेस का? बिकॉज Q इनसाइड के जगह में लगाना पड़ेगा, कितना चार्ज है? टेल मी हाउ टू टेल, राइट? इसका अंदर में चार्ज कितना है? बिकॉज इन्फिनिट वायर है, इन्फिनिट वायर है ना. आई कैन पुट गॉसियन सरफेस इतना 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 कितना भी बड़ा लगा सकता हूँ ना. दैट्स व्हाई आई टुक द लेंथ L लिया. ओके, यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ लैम्डा. ओके, सो लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, राइट? सो देयरफॉर Q कितना होगा? Q इज इक्वल टू लैम्डा L. मतलब अगर लेंथ 2L लिया तो 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा आएगा चार्ज, 3 लिए तो 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा आएगा. दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, बिकॉज वी डोंट नो एग्जैक्टली चार्ज कितना है बोल के, राइट? So Q inside की जगह में lambda L by epsilon naught. So L cancel. Therefore, electric field is equal to lambda by 2 pi epsilon naught R. ये फॉर्मूला याद है? देखा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनफाइनाइट पर इस वाला है ना. lambda by 2 pi epsilon naught R or 2k lambda by D. That only R, right? That only. So एक फॉर्मूला याद रखो, that's it. Lambda by 2 pi epsilon naught R is a formula which is derived by using Gauss law. And if you see here, the electric field is inversely proportional to the R distance. मतलब as we go away from the wire, the electric field goes on decreasing. यही steps follow कर रहे हैं in all the cases, 4 applications में. So पहले Gaussian surface, then find flux by through mass and equate with Q inside by epsilon naught. Now finish now. Now electric field versus distance का ग्राफ कैसा आएगा? यस, ड्रा कर लो. इलेक्ट्रिक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R in a infinite wire. Inverse relation. As the distance increases, the electric field decreases. This formula is for electric field, right? Okay, lambda by 2 pi epsilon naught R. First application done. Okay, इसका बेस में करो, सिंपल वाला, सिंपल न्यूमेरिकल करो. The charge per centimeter length of the wire is Q coulomb. Charge per centimeter is Q coulomb. मतलब Q coulomb is per 1 centimeter. The total flux passing through the cylindrical surface, ये वाला पूरा पॉजिटिव चार्ज है. ओके, वायर में पूरा पॉजिटिव चार्ज है.
The how much flux coming from the cylindrical surface is asking. Here we cannot apply formula, right? Formula तो electric field का formula है. Flux is asking. This is Gaussian surface जैसे act हो रहा है ना? So how much flux coming from the cylinder? What is the formula? Flux coming from the total flux coming from the cylinder. याद है? Last class we done. Gauss law में. How much flux coming from the complete cylinder is Q inside by epsilon naught, right? Q inside by epsilon naught. Now how to find Q inside? Try to. इसका length is given as 1 meter and radius is 50 centimeters. Now try. Q inside find किया तो खत्म हो जाएगा. तो इसका अंदर कितना चार्ज होगा सिलेंड्रिकल के अंदर? He has given condition, right? 1 Lambda सेंटीमीटर Q. लेंथ में इतना चार्ज होगा. कितना? 1 centimeter Q charge. हाँ, 1 सेंटीमीटर क्यू चार्ज दिया है. इतना लेंथ में कितना चार्ज होगा? राइट डिपेंड. 100. 100 क्यू. खत्म. 100 क्यूब है. एप्सिलॉन इज आंसर. ओके, लिखो. सी 1 सेंटीमीटर में क्यू चार्ज है तो 1 मीटर लेंथ इज नथिंग बट 100 सेंटीमीटर. 100 सेंटीमीटर्स में कितना चार्ज होगा? सो दैट इज 100 क्यू. So Q inside is 100, nothing but 100 Q. 100 Q by epsilon. This is answer. So charge find करने के लिए बहुत यूजफुल होगा. वो देगा. This is what indirectly they given lambda. Lambda is given to you. Charge per unit length. Okay. उसका मीनिंग वही है. चार्ज पर यूनिट लेंथ मींस 1 सेंटीमीटर में कितना लेंथ है, कितना चार्ज है. वो डेटा दिया तो सी इफ यू नो 1 चॉकलेट रुपीज 10 रुपीज बोले तो यू कैन फाइंड एनी नंबर ऑफ चॉकलेट्स, राइट? दैट्स व्हाट चार्ज आल्सो दे गिवन. 1 सेंटीमीटर में इतना चार्ज है तो कितना सेंटीमीटर होता है उतना यूज करने का. चलो हाँ, ये करो. एडवांस क्वेश्चन है. ट्राई कर देखते हैं. The figure below depicts two situations in which two infinitely long static charges, constant positive line charge density, ये lambda है, ये पूरा positive charge है, all are positive, infinite wire है. Okay, they given positive charge density lambda. Okay, lambda is given. Okay, are kept parallel to each other. Okay, the resultant electric field point charge q and minus q are kept in equilibrium between them. So here q is in equilibrium is telling and minus q is also at equilibrium. मतलब equilibrium के लिए सेंटर में रहेगा नहीं रहेगा? बिकॉज दोनों सेम चार्ज है एंड q इज बिटवीन, राइट? चेक करेंगे सेम रहेगा. फर्स्ट प्लेट सेकंड प्लेट मान लो. इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे E1. इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे E2, राइट? मतलब दोनों इक्वल है, अपोजिट, राइट? सो इक्विलिब्रियम में. ये वाला इसके वजह से इलेक्ट्रिक फर्स्ट प्लेट सेकंड प्लेट, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज towards right E1 and इसके वजह से electric field is E2. So here also they are in equilibrium. Okay. The point charges confined to move in the x direction only. It is moving to x direction only. Okay. If they given a small displacement about equilibrium position, then correct the statement. मैं थोड़ा डिस्प्लेस करके लीव किया तो दोनों को, इसको लीव किया इसको भी लीव कर दिया, देन क्या होगा? एडवांस क्वेश्चन है. थिंक एंड टेल. क्वेश्चन स्टूडेंट, अगर मैं लीव किया तो क्या होगा? प्लस क्यू क्या होगा, माइनस क्यू क्या होगा? So C. देखेंगे.
अगर थोड़ा डिस्प्लेस किया तो क्या होगा? सत्य बोलो। So I'm getting C only. Why? Explain. See. So if you move the positive charge, you get repelled because of strong force of repulsion. तो थोड़ा इधर small displacement दूंगा, then Yes. क्या होगा? It will It will repel repel. backside. Repel back, but it will not stay here because of inertia. It will go there. Yes. Again, it will go like this. ऐसा oscillate करेगा. क्यों oscillate करेंगे? इसका This इसका one क्या gets होगा? activated because strong force of attraction. Distance is less, then it push. देखो, force will be acting in the opposite direction to that of electric field, right? Right? अगर मैं थोड़ा displace इधर करूंगा, then क्या होगा? ये खींच लेगा. ये खींच लेगा. So that means it will not oscillate. It will oscillate. Answer is C. Good. समझ में आ रहा है? Charge Q execute SHM by minus Q continue move in the direction of displacement. किस तरफ move displacement होगा उसी direction में चले जाएगा. Okay? चलो. अरे छोड़ो सन में. Yeah. चलो. Second one. Second one is electric field due to infinitely charged cylinders. Now we are talking about cylinders. देखो, cylinders में आपको थोड़ा understand करने का, we have two parts actually. देखो, one is hollow conducting cylinder, hollow non-conducting cylinder, and solid. दूसरा solid conducting cylinder and solid non-conducting cylinder. Okay. Now hollow में, hollow means what? Cylinder का inside empty है पूरा. If I given a charge to it, it will resides on the surface only. It will always stay on the surface only because hollow inside कुछ नहीं है. तो पूरा चार्ज अगर मैं थोड़ा दिया तो भी ये पूरा इधर सरफेस में आएगा. इट रिसाइड्स ऑन द सरफेस. हॉलो एम्प्टी है ना, नीचे कुछ अंदर कुछ नहीं है. चार्ज विल बी रिसाइड्स ऑन द मेटल सरफेस के ऊपर रहेगा चार्ज. नाउ कमिंग टू द सॉलिड सिलेंडर. सॉलिड सिलेंडर मींस material is there completely inside. There is material also completely. Now tell me what will happen if I given a charge to inside it. What will happen? Solid conducting cylinder में मैं एक इंजेक्शन लेके I inserted the charges. Okay, now what will happen? इसका इनसाइड में रहेगा और आउटसाइड ही रहेगा और क्या होगा? Everywhere. What? Everywhere. But solid conducting में when you give inside charge also, charge will resides on the surface only. Because repulsion होके, पूरा repulsion होके कंडक्टिंग है ना, कंडक्टर के थ्रू जल जाएगा एंड पूरा ऊपर वन विद इन फ्यू सेकंड्स में पीछे ऊपर आ जाएगा. सो इसमें भी ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस. नाउ कमिंग टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर. नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर में आपको एक कंडक्ट नहीं करेगा ना. व्हेन आई इंसर्टेड चार्जेस लाइक दिस इनसाइड में, एवरीवेयर इट विल बी देयर. एंटायर वॉल्यूम में इट विल बी देयर. Okay, that's difference you have to understand. Only solid non-conducting cylinder. That means we are trying to find इसका एक केस है पूरा. we'll try to find the electric field outside cylinder, surface में, inside cylinder we are trying to find electric field. These three cases. ये वाला भी separately we will deal outside, surface and inside. Okay, चलो कब बेटा वाला understood it? Now we'll go for the first तीन वाला. we'll see. Sorry, पूरा surface में. Why we are talking about surface means whether we use lambda or sigma, which one will use? Surface के ऊपर है charges. So which one? Sigma. So surface charge density we'll use. Okay, चलो that's why we are dealing this one solid conducting
hollow conducting और hollow non conducting cylinder, तीनों में we are same cases, same thing. Our interest is to calculate the electric field inside, outside and वाला, ठीक है. First we'll try to find in तीन cases same only inside. Okay, so this is a cylinder of radius capital R. Okay, तो चार्ज पूरा आपको resides on the surface. इनसाइड कुछ भी चार्ज नहीं है, आउटसाइड ऑन रहेगा. कंडक्टिंग है ना, आउटसाइड रहेगा. नाउ आई वांट दिस एक्सिस, सेंटर से एक्सिस, मुझे r डिस्टेंस दूर में आई वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P बाय यूजिंग गॉस लॉ. सो क्या करेंगे, फर्स्ट आपको गॉसियन सरफेस बनाएंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे. ओके, सो इधर से भी r डिस्टेंस दूर जाके सिलिंड्रिकल इज अ गॉसियन सरफेस, लाइक स्मॉल इनसाइड में, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट r इज लेस देन कैपिटल R, इसके बारे में टॉकिंग अबाउट. ओके, नाउ टेल मी फ्लक्स का फॉर्मूला लिखो. फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. ओके, टेल मी बिफोर कैलकुलेटिंग फ्लक्स, अभी तीन सरफेस है ना ऊपर, 1 2 3. सो बिफोर कैलकुलेटिंग यू टेल मी Q इनसाइड कितना है, टेल मी. इस गॉसियन सरफेस का अंदर में Q इनसाइड इज हाउ मच? Zero. बिकॉज चार्ज रिसाइड्स ऑन सरफेस, अंदर चार्ज ही नहीं है, इस गॉसियन सरफेस का अंदर है 0. सो इफ आई सब्स्टिट्यूट 0, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0. खत्म, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. वी स्टडी वही ना, इनसाइड ऑफ द कोई भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0 अंडर स्टैटिक कंडीशंस में. दिस ऑल, अदरवाइज फ्लक्स फाइंड करके वेस्ट है. क्यू इनसाइड 0 है ना, सो फ्लक्स जरूरत नहीं. नाउ विल गो फॉर आउटसाइड में. आउटसाइड में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है. ओके, कॉपी वाला ट्राई करो, ड्रॉ करो आउटसाइड में लगा के, r डिस्टेंस दूर में, अगेन सेम सिमेट्री ड्रॉ करके l लगा के करने का, लेंथ के l. ओके, चलो नो आउटसाइड करेंगे. सेकंड वन इज, okay, second one is outside. Outside means here r is greater than capital R. Okay, मतलब सिलेंडर है, इस एक्सिस से r डिस्टेंस दूर में, which is greater than r, right? r डिस्टेंस में I want to find electric field at this point by using Gauss law. So इसको हम लोग again we have to draw a symmetry, right? इसका भी cylindrical on, right? r cylindrical only, so that the charge is symmetrical. देखो charge will be resides on the surface. मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर में चार्ज इज देयर नाउ. ओके, चार्ज इज देयर, अंडरस्टूड, क्लियर. ओके, नाउ फाइंड, नाउ फ्लक्स यूज करो. फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड वी आर यूजिंग सिग्मा हियर. सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया. ओके, चार्ज पर यूनिट एरिया, we'll use that one to find the this Q inside के जगह में we are trying to find. Okay, now tell me how many surface are there again? एक Gaussian surface का तीन surface are there, right? Three surface are there. So here because of this electric field is ऐसे ना, electric field is away. Okay, इस एरिया का फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस. टेल मी फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस कितना होगा?
0. 0. Second surface also 0, right? Q inside by epsilon. Okay, so first one is 0 plus closed integral E dot dA is equal to Q inside by epsilon. Okay, here area कितना है? Area and electric field का angle is how much? दोनों को 0, right? Cos 0 is 1. यूज करो, कितना होगा? Net flux will be closed integral. देखो E is constant, बाहर आ जाएगा, magnitude is constant. Integral dA is equal to Q inside by epsilon because cos 0 is 1. Okay, now dA मिल गया तो कितना होगा टेल में? इसका इसका लेंथ L है. सो एरिया कितना है? टोटल एरिया इज ऑफ द गॉसियन सरफेस कितना है? टोटल एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस हाउ मच? 2 pi rn. 2 पाई आर कैपिटल स्मॉलर. गॉसियन सरफेस का कितना है? स्मॉलर, राइट? उसका ओनली वेट यूज राइट हियर E into 2 pi r L because flux we are trying for the Gaussian surface. उसका only we are trying to find. Okay, is equal to now tell me इस Gaussian surface में Q inside कितना है? Q inside कितना है? In terms of sigma में आएगा ना? Sigma A. Sigma A, right? हाँ. So sigma into area. हाँ. Area कितना है tell me? Area इस गॉसियन सरफेस के अंदर में चार्जेस है, राइट? क्यू इनसाइड 2 pi capital rn. 2 pi capital because charge will be there on the this only, not this one, right? Charge will be there on that surface में capital R में है ना, so that's why 2 pi capital R L because charge into sigma into area, right? By epsilon. So 2 pi R, 2 pi cancel, L cancel. So therefore electric field will be sigma capital R by epsilon naught R. सी ये सिलेंड्रिकल का फॉर्मूला बैड करने की जरूरत नहीं है. ओके, आपको डिराइव करेंगे, दैट्स इट. कुछ डायरेक्टली दे विल नॉट आस्क. सिग्मा R by epsilon naught R and here क्या होगा? Here also you see E is proportional to 1 by R. Now tell me सरफेस में कितना होगा? If the small r is here, so small r के जगह में क्या डालूं? See from here to here capital. So at surface में this is inside, right? At surface में sigma r by epsilon naught into capital R because r के जगह में capital R डालूं surface में. So capital R cancel, sigma by epsilon naught. खत्म. This is a electric field. So inside you got 0, surface में sigma by epsilon naught बढ़ गया and outside again inverse direction. Now graph draw करेंगे इसका. ये डेरिवेशन किया तो ये आपको क्वेश्चंस आपको आज खिलेगा, नहीं तो इसको डायरेक्टली इफ यू रीड द फॉर्मूला कुछ भी एक प्रॉब्लम में नहीं कर सकते. डायरेक्टली आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा, गॉस लॉ एप्लीकेशन करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड. ओके, चलो नाउ ग्राफ ड्रा करो इसका. E वर्सेस R. ओके, ये वाला इधर से इधर तक एक कैपिटल है, राइट? हाँ. नाउ टेल मी इसका ग्राफ कैसा रहेगा? इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हियर टू हियर 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ऐसा आएगा, हियर ऐसा आएगा, ये वाला आई एम ड्राइंग हियर. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 एंड बाद में ऊपर से एक ही बार बढ़ गया, सरफेस में बढ़ गया एंड बाद में आउटसाइड इट विल डिक्रीज, राइट? ऐसा आएगा आउटसाइड. तो मैं सरफेस में बढ़ गया, हियर आउटसाइड इज E is inverse proportional to 1 by R. एंड सरफेस में कितना है इसका? इज मैक्सिमम, राइट? सरफेस में E मैक्स है, दैट इज हाउ मच? सिग्मा बाय एप्सिलॉन.
Now cylinder में one more case is there, right? Which is non-conducting solid cylinder. मतलब चार्जेस पूरा उसमें है. So which one will use? सिग्मा और रो. चार्ज कंप्लीटली फिल्ड है, मतलब पूरा नॉन कंडक्टिंग है ना, वेट यूज रो. Rho. रो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. नाउ डिराइव करो. सॉलिड नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट सिलेंडर्स. पहले इनसाइड करो. नो यू कैन डू इजीली. इनफाइनाइट सिलेंडर है, इसका रेडियस इज आर. मुझे इधर से आर डिस्टेंस दूर में आई वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट. एंड सिंस टोटली वॉल्यूम में पूरा वॉल्यूम इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इनसाइड विल बी जीरो ना. ये टोटली रो यू आर यूजिंग चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. नाउ इधर से मुझे इनसाइड वाला चाहिए फर्स्ट वन. इनसाइड. इनसाइड मींस आर इज लेस देन कैपिटल आर. ओके. नाउ टेल मी क्या करेंगे. इनसाइड जीरो होगा. नो. नो, बिकॉज चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है ना. सो इधर से भी आर डिस्टेंस दूर जाके आई एम ड्रॉइंग ए गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस ऑफ लेंथ एल. ना फ्लक्स फॉर्मूला डालेंगे. फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. ओके. नाउ फ्लक्स तीन सरफेस है. तीन सरफेस का फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. ओके. फ्लक्स फर्स्ट सरफेस का सेकंड सरफेस का जीरो है. वो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे, राइट. एंड थर्ड सरफेस का डी ए एंगल जीरो, राइट. इधर तक सेम है ना. सो फ्लक्स फाई वन जीरो प्लस फाई टू जीरो प्लस फाई थ्री विल भी कितना होगा, डायरेक्टली बोल सकते हैं. फाई थ्री सो मच ई इंटू एरिया, राइट. कितना है, ठीक याद है. क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए. ई डी ए कॉस जीरो आएगा. ई डी ए एंड ई विल बी कमिंग आउटसाइड. इंटीग्रल डी ए विल बी कितना होगा, टू पाई आर एल. टू पाई आर एल. सो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इधर. ओके. सो ई इंटू टू पाई आर एल इज इक्वल टू, हाँ नो, क्यू इनसाइड कितना है. क्यू इनसाइड इसका इसके अंदर में, बिकॉज इन्फिनिट इन्फिनिट सिलेंडर्स है ना, इसके अंदर पे कितना वॉल्यूम है, मतलब वी आर यूज रो, राइट. रो इनटू वॉल्यूम. एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज हाउ मच, एरिया इनटू हाइट कितना Pi होगा, r square पाई आर स्क्वायर एल, राइट. L. हाँ, सो पाई आर स्क्वायर एल, एरिया इनटू लेंथ, राइट. हाँ, बाय एप्सिलॉन. सो पाई पाई कैंसिल, एक एल एल कैंसिल, एक आर कैंसिल. सो कितना होगा, E इज इक्वल टू रो आर बाई टू एप्सिलॉन नॉट. रो आर बाई टू एप्सिलॉन नॉट. एंड हियर इफ यू सी E इज प्रोपोर्शनल टू R. देखो इधर प्रोपोर्शनल, नॉन कनेक्टिव में ऑलवेज प्रोपोर्शनल आएगा. मतलब एज वी गो द वॉल्यूम ऑफ द चार्ज इज इंक्रीजिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड गोस ऑन इंक्रीजिंग अप टू सरफेस तक इंक्रीज होगा, बाद में डिक्रीज हो जाएगा. ये वॉल्यूम है ना पूरा, तो E इज प्रोपोर्शनल टू R आएगा. ओके. नाउ आउटसाइड डिराइव कर सकते हैं. डिराइव करो आउटसाइड. देखते एक तो करो, आंसर देखते हैं.
सो आउटसाइड रहेगा गॉसियन सरफेस सिलेंडर, ट्राई करो. Is it rho capital R square by 2 R epsilon naught? वेरी गुड, सुपर गुड. आया ऐसा आपको? कर रहा करो. तो सेम थिंग, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस, एंड पूरा चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा. दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे. ओके, इधर इधर एंड इधर 0 से 0 है, ओनली इधर है ना. सो दिस इज डी ए. सो फ्लक्स तो ओनली 3 का रहेगा, ई इंटू 2 π r l, ये तो सेम है ना, इज इक्वल टू क्यू इनसाइड. क्यू इनसाइड विल बी रो इंटू वॉल्यूम. यूज करो. Sir, E is equal to rho R capital R by 2 small कैपिटल r स्क्वायर epsilon. आएगा, कैपिटल स्क्वायर आएगा. Yes, sir, So, capital R square. Yeah. पाई आर स्क्वायर एल बाई एप्सिलॉन. हाँ, कैप रो कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन स्मॉलर. इश आई गॉट. Yes. सो इधर Yes. पाई पे कैंसिल, एल एल कैंसिल. सो रो कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन आर. दैट मीन्स हियर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर, राइट. समझ गया ना. नाउ ड्रॉ द ग्राफ. इनसे सरफेस में कितना होगा, दिस इज द आउटसाइड राइट. सरफेस में कितना होगा, स्मॉल आर के जगह में कैपिटल आर लगो. सो कितना होगा. Rho R by 2 pi epsilon naught. दैट्स इट. सो नाउ मतलब इनसाइड टू आउटसाइड द आर इज प्रोपोर्शनल टू, ई इज प्रोपोर्शनल टू आर, आउटसाइड डिक्रीजेस. नाउ ग्राफ कैसा रहेगा, ई वर्सेस आर. दिस आर, दिस इज आर. सो 0 टू आर तक इंक्रीज होगा, बाद में इट विल डिक्रीज. ई इज इनवर्स टू आर and this is E is proportional to R. Done. No? This is the second application done. The third application, same thing like spheres, conducting spheres on as a spheres we'll see. Okay, electric field due to charge spheres. Now spheres also, tell me, it is classified in two types. Tell me क्या क्या है. Hollow conducting spheres and hollow non-conducting spheres. And here solid conducting spheres and solid non-conducting spheres. Here hollow है, कुछ भी इंसर्ट नहीं है, पूरा चार्ज resides on the surface. And this also solid conducting also, charge resides on the surface. पूरा solid है तभी charge resides on the surface only. Conducting है ना, उसके through it will go to the surface only. ये भी पूरा surface में रहेगा. मतलब here we will use sigma here again. And एक ही solid non-conducting sphere है, उसमें क्या होगा, charge resides in a complete volume. So इसमें आपको रो यूज करने वाला है, solid. That means फर्स्ट 3 केसेस का आपको फाइंड करने हैं. फाइंड करो फर्स्ट 3 केसेस का. नो इजी. So first one is electric field due to hollow conducting, hollow non-conducting, solid conducting sphere. Inside पेन करो पहले. A hollow है, charge resides on the surface.
इसका रेडियस इज कैपिटल। मुझे r डिस्टेंस दूर में इस पॉइंट P में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इनसाइड पॉइंट r इज लेस देन r। इसका गॉसियन सरफेस क्या होगा? स्फीयर ओनली। सो फ्लक्स is equal to closed integral E dot dA is equal to Q inside by epsilon. Okay. What is Q inside in this Gaussian surface के अंदर में? कितना होगा? Q inside कितना होगा इस Gaussian surface के अंदर में? Because charge resides on the surface में. There is no charge inside. Okay, zero. So Q inside is zero. Therefore electric field is zero. Hollow में inside there is no charge. अगर ना आउटसाइड पेंट करो, outside which is r is greater than capital. So a charge resides on the surface. इधर से r distance दूर में I want to find electric field at this point P. Radius is capital. So इसका Gaussian surface is sphere only, complete sphere. So the charge will be symmetry. Now find करो. In terms of sigma में चाहिए first initially. इस Gaussian surface का flux find करना था ना? इसके वजह से electric field is away and dA vector, small dA vector will be taking, right? And flux find करो. So closed integral E dA cos 0, right, is equal to Q inside by epsilon. So E will be coming outside. What is dA? dA मिल गया तो इस surface का, it is sphere का area, right? E into what is this? 4 pi r square is equal to Q inside. Q inside इसका tell me, इसका sigma is given to you. Total volume में distribute होगा ना? No, total area में distribute होगा ना? That's why we are using area. Sigma we are using because it is a hollow conducting, right? Total surface में रहेगा. Total में sigma times of 4 pi capital R square. capital R square. Very good. 4 pi capital R square because charge will be there in this sphere only, not Gaussian surface, right? By epsilon. So 4 pi cancel. So therefore E is equal to sigma R square by epsilon naught. R square epsilon naught. Right? Or epsilon naught R square. Epsilon naught R square. Okay. अगर वो चार्ज नहीं दिया, अगर चार्ज दिया तो if you see here E is proportional to 1 by R square. Here it is 1 by R square. Okay, अगर चार्ज Q दिया तो so how much electric field will be there? Directly instead of sigma they are given total charge is Q only. That time किधर है? इसको equate with Q rate. नो कितना होगा? Electric field is equal electric field into 4 pi R square is equal to Q by epsilon naught, right? So therefore electric field कितना होगा? Q by 4 pi epsilon naught R square and 1 by 4 pi epsilon is nothing but K only, right? So K Q by R square which is a point charge formula, very important. मतलब आपको याद रखो any sphere conducting होने दो non-conducting होने दो outside formula electric field is K Q by R square which is a point charge का formula. This one you remember. K Q by R square. Easy है. This is electric field for point charge, right? So sphere outside point is K Q by capital R square. K Q by small r square, right? This is 4 pi R square, right? K Q by small r square. K Q by small r square is a formula outside में कभी भी. Even for non-conducting also K Q by small r square only. Surface में कितना होगा? Smaller will become capital R. Surface में so much? K Q by capital R square. Surface में, right?
स्मॉलर विल बिकम कैपिटल, राइट? वो कैपिटल लगा देंगे, मतलब इनसाइड में इट इज 0, आउटसाइड में इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। नाउ ग्राफ ड्रॉ करो। इन टर्म्स ऑफ सिग्मा में आल्सो वी कैन टेल, राइट? क्या स्मॉलर की जगह में कैपिटल लगाए तो कैपिटल और कैपिटल स्क्वायर कैंसिल, ई एट सरफेस विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इन टर्म्स सिग्मा में एक फॉर्मूला याद रखो, हो जाएगा उसका, वी कैन कन्वर्ट इनटू सिग्मा टर्म्स में आल्सो। ओके, इसका ग्राफ कैसे रहेगा? ड्रॉ करो, ई वर्सेस आर। स्फीयर, इसका रेडियस इज आर। इनसाइड तो 0 है, आउटसाइड इज इधर तक इंक्रीज होगा, सरफेस पे इंक्रीज होगा, बाद में इट डिक्रीज टू दिस वन। दिस इज इनवर्स 1/r²। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा वन टू क्वेश्चंस करके, देन वो वाला नॉन कंडक्टिंग करके एक इनफाइनाइट प्लेट इज देयर, कल हो जाएगा कंप्लीट डन पूरा।